हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज कोर 5 जो रही थर्ड सेमिस्टर पिलांगर कोर 5 पेपर तार इंग्लिश मीडियम डिस्कसन करवा चल। तेणु भिडियोटी आरंभ शेष पर्यंत देखिए। पिला मैंने रिक्वेस्ट करते मैडम इंग्लिश मीडियम रे करंतु क्लास बोलिके, तेणु आज जो रही कोर 5 पेपर असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन से पेपर डिस्कसन करवा। तेणु टेस्ट मेजरमेंट एंड आसेसमेंट जोटा रही टेस्ट आसेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। तेणु ये टेस्ट आसेसमेंट एवं इवैल्यूएशन बा मेजरमेंट टेस्ट एवं इवैल्यूएशन कौन दरकार रही आमर एजुकेशनल प्रोसेस रे। एजुकेशनल प्रोसेस इज ए कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। इट इन्वॉल्व्स मेनी कंपोनेंट्स लाइक स्टूडेंट, टीचर, स्कूल organization and environment. An educational process is considered successful if all these exponents operate successfully. In order to know the effectiveness of an educational system, we require a good evaluation system. Evaluation in education is a complex process. It requires a variety of techniques, quantitative and qualitative assessment. A comprehensive evaluation system involves all these techniques. Let's discuss the basic concepts and components of the evaluation process. तेणु इवैल्यूएशन प्रोसेस रे आम जो एजुकेशनल प्रोसेस रे आम इवैल्यूएशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। तेणु इवैल्यूएशन करने आमको दरकार टेस्ट, मेजरमेंट बा असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। तेणु व्हाट इज ए टेस्ट? Now, quantitative assessment is one of the important aspects of the educational evaluation process. For the quantification of a learner's achievement, we need an effective tool. A test helps us in this direction. कहले पिलामानकर जो अचीवमेंट आम कौन कर इभालुएट करुचे तापी आमर गोटे टेस्टर आवश्यकता रही ताको टेस्ट द्वारा ही आम पिलामानकर अचीवमेंट मेजर करथाउ। What is a test? A test may be called as a tool, a question or set of questions, an examination which is used to measure a particular characteristic of an individual or a group of individuals. It is something which provides information regarding individual's ability, knowledge, performance and achievement. टेस्ट कौन ना टेस्ट में भी ए टूल कहले गोटे कौशल हो पारे, गोटे अस्त्र हो पारे, गोटे क्वेश्चन हो पारे और सेट ऑफ क्वेश्चन कहले केते गुड़े प्रश्नर समाहार। तापर डेफिनेशन देखा आस कौन ना अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन सी भी गुड कौन कहते ना ए टेस्ट इज ए ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस और टास्क टू व्हिच ए स्टूडेंट इज टू रेस्पॉन्ड, the purpose being to produce a quantitative representation of the pupil's trait that it is designed to measure. कहले कौन इट इज ए सेट ऑफ क्वेश्चंस। प्रथम जान ए टेस्ट इज ए सेट ऑफ क्वेश्चंस। इट इज डिजाइन टू प्रोड्यूस ए क्वांटिटेटिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्यूपिल। क्वांटिटेटिव रिप्रेजेंटेशन कहले आम जो परीक्षा करुचे से परीक्षा रे पिला मानकर अचीवमेंट जहाँ रोचे आम कौन करछे क्वांटिटी बा नंबर रे परिप्रकाश करुचे। तेणु कहुचे क्वांटिटेटिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्यूपिल्स अचीवमेंट और ट्रेट। तापर कौन कहते ना बोरो एंड मार्क गी कौन कहले ए टेस्ट इज ए स्पेसिफिक टूल और प्रोसीजर और ए टेक्निक यूज्ड टू ऑब्टेन रेस्पॉन्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स इन ऑर्डर टू गेन इंफॉर्मेशन व्हिच प्रोवाइड्स द बेसिस टू मेक जजमेंट or evaluation regarding some characteristics such as fitness, skills, knowledge and values. बुझीपार बोरो एंड मार्क गी कौन कहले। तापर आस देखा व्हाट आर द नेचर ऑफ टेस्ट। टेस्ट प्रकृति कौन रही ना द नेचर ऑफ टेस्ट मे बी डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज। प्रथम पॉइंट कौन है ना द टेस्ट मस्ट अकम्प्लिश विथ नॉर्म्स। गोटे नॉर्म बा गोटे धारा द्वारा अकम्प्लिश हो। तापर द टेस्ट इज ए रिलायबल इंस्ट्रूमेंट। यह गोटे विश्वस्त कौन इंस्ट्रूमेंट कहले कौन गोटे यंत्र बा गोटे टूल बा कौशल। तेणु थर्ड पॉइंट हूँ कौन द टेस्ट इज ए वैलिड इंस्ट्रूमेंट। द टेस्ट इज ऑब्जेक्टिव। निश्चित टेस्ट ऑब्जेक्टिव हवा आवश्यक। आम जो मेजरमेंट पेपर रही जे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवैल्यूएशन तार ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी एंड यूजेबिलिटी। तेणु ये ऑब्जेक्टिविटी रहा निहाती आवश्यक।
तापर नेक्स्ट होची इट प्रोड्यूसेस रिजल्ट्स एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशंस। तापर नेक्स्ट होची इट इज अकॉर्डिंग टू एजुकेशनल वैल्यूज जार कि एजुकेशनल वैल्यू रही कार टेस्ट निश्चिंत एजुकेशनल वैल्यू रहा दरकार। तापर यूजेस ऑफ टेस्ट टेस्ट कौटी व्यवहार करा जाए फॉलोइंग एंड सम मेजर यूजेस ऑफ टेस्ट द टीचिंग इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तेणु प्रथम हूँ कौन ना टेस्ट आर यूज टू आइडेंटिफाई व्हाट स्टूडेंट्स हैव लर्न कौन स्टूडेंट माने लर्न कर शिक्षा ग्रहण कर मापिवाई टेस्ट व्यवहार करा जाय थाए। It is a major task after completion of a lesson or unit to know what the students have learned. It helps the teacher to analyze the results to see where the majority of the students are having problems. तेणु प्रथम कथा है कौन ना टेस्ट आर यूज टू आइडेंटिफाई व्हाट स्टूडेंट्स हैव लर्नड केते दूर शिक्षार्थी मैंने ग्रहण कर शिक्षण ताकू मापिवाई शिक्षा टेस्टर आवश्यकता रही। तापर सेकेंड पॉइंट हूँ कौन ना टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को स्टूडेंट वीक अच्छे और को स्टूडेंट भल अच्छे मापिवाई चिन्हट करने टेस्टर आवश्यकता रही। अनदर यूज ऑफ ए टेस्ट इज टू डिटरमाइन द स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस प्री टेस्ट बिफोर बिगिनिंग ऑफ ए टॉपिक इज ए गुड एग्जांपल ऑफ दिस। तापर नेक्स्ट पॉइंट हूँ टेस्ट्स हेल्प टू प्रोवाइड ए मेथड for awards and recognition. Tests are used to determine who will receive a particular awards and recognition. Test is an example. NRTS is an example of this. NRTS जो एग्जामिनेशन है पिलाମାନଙ୍କ मध्य पंचम षष्ठ रे। तापर नेक्स्ट पॉइंट हूँ टेस्ट आर यूज टू गेन कॉलेज क्रेडिट ताମାନେ କ'ଣ ନା advanced placement examinations provide students with the opportunity to earn college credit after successfully completing a course and passing the examination with high marks. तापर नेक्स्ट पॉइंट हूँ टेस्ट हेल्प टू प्रोवाइड ए वे टू मेजर ए टीचर एंड द स्कूल। नाउ इट हैज बिकम ए प्रैक्टिस टू यूज दिस टेस्ट रिजल्ट्स टू इवैल्यूएट एंड गिव मेरिट राइजेस टू द टीचर्स themselves. This use of high stake and testing is often continuous with education since many factors can influence a student's grade on an examination. तापर देखिए नेक्स्ट पॉइंट हूँ टेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड ए बेसिस फॉर एंट्री इनटू एन इंटर्नशिप प्रोग्राम और इंस्टीट्यूशन। तामाने कौन टेस्ट हेल्प एडमिनिस्ट्रेशंस टू सिलेक्ट स्टूडेंट्स फॉर ए particular course or institution. AIPMT and JEE are examples of this type of a test. Tests are also required to select persons for internship after completing courses like MBBS, BEd, ITI, etc. तेणु गोटे कोर्स सरला आउ गोटे जो आम जाऊे आउ गोटे किसी भोकेशनल कोर्स नापी ताप जो एंट्रांस टेस्ट गुड़िक हो ताको इंटर्नशिप प्रोग्राम इंस्टीट्यूशन बोली कहुच्छे एंट्री करने तापर देखिए पे व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ टेस्ट टेस्ट कौन मेरिट्स रही व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ टेस्ट टेस्ट आर नॉट ओनली एडमिनिस्टर्ड टू अवार्ड ग्रेड्स बट ऑल्सो सेवरल अदर बेनिफिट्स इन एजुकेशनल सिस्टम। द मेरिट्स ऑफ टेस्टिंग आर एज फॉलोज कौन ना टेस्ट हेल्प टू आइडेंटिफाई इन नॉलेज तापर टेस्ट हेल्प स्टूडेंट्स टू लर्न मोर फ्रॉम द नेक्स्ट स्टडी सेशंस। तापर देखिए थर्ड पॉइंट हूँ कौन ना टेस्टिंग टेस्ट प्रोड्यूसेस बेटर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज। तापर फोर्थ पॉइंट हूँ टेस्टिंग इम्प्रूव्स ट्रांसफर ऑफ नॉलेज टू न्यू कॉन्टेक्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट हूँ टेस्टिंग इम्प्रूव्स मेटा कॉग्निटिव मॉनिटरिंग। नेक्स्ट पॉइंट हूँ फ्रिक्वेंट टेस्टिंग डेवलप स्टूडेंट स्टडी हैबिट। तेणु युवाक हूँ टेस्टर मेरिट्स। तापर देखिए डिमेरिट्स कौन रही आहरी मध्य पॉइंट रही टेस्टिंग फैसिलिटेट रिट्रीवल ऑफ मटेरियल दैट वाज टेस्टेड। टेस्टिंग प्रिवेंट्स इंटरफेरेंस ऑफ प्रीवियसली लर्नड मटेरियल इन लर्निंग न्यू मटेरियल। तापर टेस्टिंग हेल्प्स इंस्ट्रक्टर्स इन प्रोवाइडिंग फीडबैक। युवाक हूँ टेस्टर मेरिट्स। व्हाट आर द डिमेरिट्स? द डिमेरिट्स ऑफ
Testing are as follows. First is classroom. Testing may consume too much time so that other important classroom activities like lectures, discussion and demonstration may hamper. Testing encourage rote learning. The students try to memorize materials superficially without understanding. Testing may force the forgetting of non-tested materials. Next, if not constructed with proper care, the test may provide innumerous results. तापर पे तुम रही मेजरमेंट चले तार देखा व्हाट इज मेजरमेंट मेजरमेंट तो माने आज यूजुअल कथा कथार व्यवहार कर मेजरमेंटर तेणु चल देखा व्हाट इज मेजरमेंट मेजरमेंट देख एजुकेशनल प्रोसेस रे मेजरमेंट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल मेजरमेंट इन एजुकेशन इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स फेनोमेना बिकॉज educational measurement involves the mental process of individual which can only be measured from behavior. In normal class, the instructional decisions are guided by a number of observations. For example, a teacher can know the learning difficulties of the students by asking questions on the basis of which he can take remedial measures like total repeat of a chapter or using some learning aids or instructing for more practice to a student, etc. These decisions are based upon pupils' oral responses, performances, or from gesture and posture. All these are teachers' moment to moment observation. Though these observations are informal and unsystematic, still it plays an important role in the teaching learning process. Thus, the instructional decisions greatly depends upon the effective measurement process. তাহলে what is measurement? Meaning of measurement. Measurement means quantitative, sorry এটা qualitative হয়ে যাইছে এটা হব quantitative description of data ପିଲାମାନେ ଏଠି printing mistake ଅଛି এটা ହବ quantitative description of data. It is the act or the process of ascertaining the extent or quantity of something. Measurement is a process by which we assign numbers এটা members হয়ে যাইছে এটা হব numbers assign numbers to express the quantity of an object or trait. The term has been defined in various ways differently. For example, encyclopedia of educational research. To measure means to observe or to determine the magnitude of a varied evaluation means assessment or appraisal. Encyclopedia of research कहले तापर देखिबा कोन तापर डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन सी भी गुड कहते द कंपैरिजन ऑफ ए क्वांटिटी with an appropriate scale for the purpose of determining the numerical value or the scale that corresponds to the quality to be measured. Any Gronlund and Lin Lin measurement is the process of obtaining a numerical description of the degree to which an individual possesses a particular characteristic. मोटामोटी कथा हो मेजरमेंट कहले इट इज ए प्रोसेस ऑफ क्वांटिफिकेशन माने आम जो टेस्ट करुचे टेस्ट को लेकिन पिलामानंकर परीक्षा आम जो परीक्षा करुचे टेस्ट करुचे ताको पिलामानंकर अचीवमेंट को परफॉर्मेंस को आम नंबर में परिप्रकाश करुचे ताको कहा जाउची प्रोसेस ऑफ न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन बा क्वांटिफिकेशन तापरे जेम्स एम बार्डफील्ड कौन कहले मेजरमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ असाइनिंग सिंबल्स टू डायमेंशंस ऑफ फेनोमेना इन ऑर्डर टू कैरेक्टराइज द स्टेटस ऑफ ए फेनोमेनन एज प्रिसाइजली एज पॉसिबल तापरे लिंडमैन कहते मेजरमेंट इज असाइनमेंट ऑफ वन और ए सेट ऑफ नंबर्स टू ईच और ए सेट ऑफ पर्सन्स और ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू सर्टेन एस्टाब्लिश्ड रूल्स. This set of numbers depends upon the nature of the characteristics being measured and upon the types of measuring instrument used. तापर थॉर्नडाइक एंड हेगन कहते anything that exists at all exists in some quantity is capable of being measured. तेणु क्वांटिटी रे आमे जेतबेले परिमाण रे जेतबेले कौन करछे अच्छी बोली जिनसटे आमे जानूचे सेतबेले ताको मेजर करी हेबो. तापरे पिला माने 2-3टा डेफिनेशन दबा तुम क्वेश्चन आंसर रे तेणु फ्रॉम द एबव एनालिसिस
It can be said that measurement is the process of a quantification of some phenomena. It is to assign a number or a set of numbers to one or a set of phenomena. In this process, comparison is made of a quantity with an appropriate scale for the purpose of determining the numerical value. Therefore, it can be said that measurement is a process of comparing an unknown quantity with a known with an appropriate scale or unit. Second ହେଉଛି assignment of a quantitative value. Third ହେଉଛି assignment of symbols to observations in a meaningful and consistent manner. Next ହେଉଛି determining magnitudes of a variate. Next ହେଉଛି assignment of symbols to the dimensions of the phenomena in order to characterize the status of the phenomena. Next ହେଉଛି ascertaining the extent and quantity of anything being measured. ତାପରେ ଦେଖିବା types of measurement. We can classify measurement into two types on the basis of their nature, such as physical measurement and educational measurement. Then देखिबा सब what is physical measurement. Physical measurement is complete in itself and the whole amount can be measured. It is absolute and conveys a definite meaning. In physical measurement, there are fixed or units which are constant throughout the measurement. ତେଣୁ ଫିଜିକାଲ ମେଜରମେଣ୍ଟ କହିଲେ ଫିକ୍ସଡ ଯେ ଆମେ କହୁଛେ 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ମିନ୍ସ 1 କିଲୋଗ୍ରାମ, 1 ଲିଟର ମିନ୍ସ 1 ଲିଟର। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛେ 0 ଲିଟର କହିଲେ 0 ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ଏଜୁକେସନାଲ ମେଜରମେଣ୍ଟ। ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଏଜୁକେସନାଲ ମେଜରମେଣ୍ଟ? ନା ଏଜୁକେସନାଲ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଇଜ ଭେରି ମଚ୍ ସବଜେକ୍ଟିଭ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଦେନ୍ ଫିଜିକାଲ ମେଜରମେଣ୍ଟ। Educational measurement involves mental process of the individual which is abstract and interpreted in terms of a behavior. Educational measurement is done according to some predetermined standards which may be very subjective and far from being specified. ତାହେଲେ ଚାଲ ଦେଖିବା difference between physical measurement and educational measurement. Physical measurement and educational measurement. This is physical measurement and this is educational measurement. केमी देखिबा ना फर्स्ट पॉइंट होचे in physical measurement there is an absolute zero point. It is related to a fixed standard. कहलिनी तेणु एजुकेशनल फिजिकल मेजरमेंट रे जीरो मीन्स नथिंग, जीरो मीन्स जीरो, बट इन एजुकेशनल मेजरमेंट देयर इज नो एब्सोल्यूट जीरो पॉइंट. इट इज रिलेटेड टू सम आर्बिट्रारी स्टैंडर्ड. जदि आम एजुकेशनल मेजरमेंट रे केमिति जीरो बोली कहि परिबा नाही. फॉर एग्जांपल जदि जणे इंग्लिश रे आम टेस्ट करूचे, इंग्लिश टेस्ट रे जदि गोटे पिला जीरो रखिला आम ताले कहि परिबा नाही तार जीरो बा जमा इंग्लिश नॉलेज नाही बोली कहि परिबा नाही. तेणु देयर इज नो एब्सोल्यूट जीरो पॉइंट इन एजुकेशनल मेजरमेंट. नेक्स्ट पॉइंट होची देयर इज ए डेफिनाइट ऑर्डर, बट इन एजुकेशनल मेजरमेंट देयर इज ए रिकॉग्नाइजेबल ऑर्डर. देयर इज ए रिकॉग्नाइजेबल ऑर्डर. एटी एटा लागि रहिछि तेणु देयर इज ए रिकॉग्नाइजेबल ऑर्डर. थर्ड पॉइंट होची देयर इज फिक्स्ड मेजरिंग यूनिट्स टू मेजर ए ट्रेट. But in educational measurement, there is no fixed measuring units to measure a trait. Next point is the units of measurement are constant throughout the measurement. But in educational measurement, the units of measurement varies during the process of measurement. Next point is obtained data can be interpreted directly, but in educational measurement, obtained data are converted to standard scores for interpretation. Next point होची it includes traits that can be measured directly, but in educational measurement traits are not inferred from behavior. Traits are inferred from behavior. केमिति कहूचे आम गोटे जिनसर ओजन करवा केमिति ओजन जिते आम करुचे धर ओजन को आम कौन यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट व्यवहार करछे ना किलोग्राम. तेणु जेकोसी जिनसर ओजन करने मेजर करने आम किलोग्राम डायरेक्टली व्यवहार करें, किंतु एजुकेशनल मेजरमेंट रे आम इंग्लिश ज्ञान व गणितर ज्ञान निर्णय करने सेमती डायरेक्टली किसी मेजर करे ना. नेक्स्ट हूँ द मेजरमेंट इज ऑब्जेक्टिव बट इज द मेजरमेंट मे बी सब्जेक्टिव कौटी एजुकेशनल मेजरमेंट रे. नेक्स्ट हूँ देयर इज डेफिनाइट टूल टू मेजर ए पर्टिकुलर वेरिएबल. There is no definite tool to measure a particular trait or variable. Next होची the data are generally expressed in ratio scales, but in educational measurement the data can be expressed in nominal, ordinal or ratio scale.
Next point is the measurement is absolute, but in educational measurement the measurement is relative. तापर आस देखा व्हाट आर द नेचर ऑफ एजुकेशनल मेजरमेंट। प्रथम पॉइंट हूँ ना इन एजुकेशनल मेजरमेंट देयर इज नो एब्सोल्यूट जीरो पॉइंट। ताने कौन इन एजुकेशनल मेजरमेंट देयर इज नो एब्सोल्यूट जीरो पॉइंट, इट इज रिलेटेड टू सम आर्बिट्ररी स्टैंडर्ड। फॉर एग्जांपल ए स्टूडेंट हैज सिक्योर्ड जीरो इन ए टेस्ट ऑफ इंग्लिश, मुझे जोटा पूर्व कही सारे, इट डज नॉट मीन दैट द स्टूडेंट हैज ए जीरो नॉलेज इन इंग्लिश बिकॉज ही मे सिक्योर्ड 20 in another test which is easier than the first one. As the 0 point is not fixed, so we cannot say that a student with a score of 40 has double the knowledge of a student with a score of 20. 20 ର double କେବେ 40 ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଏଠି କହିପାରିବା ନାହିଁ। ତାପରେ next point ହେଉଛି the units are not definite. In educational measurement the units are not definite, so we may not obtain the same value for every person because the test may vary in content and difficulty level. Therefore, one individual may perform differently and different individuals may perform differently on one test. The next point is it conveys a sense of infinity. It conveys a sense of infinity. It implies that we cannot measure the whole of an attribute of an individual. Generally, the scores obtained from a measurement are observed scores which contain measurement errors. Therefore, true score is infinite and unknown. Next point is it is a process of quantification. In educational measurement, the characteristics and traits are translated into numerical terms. Quantification means how much or to how extent a particular attribute is present. Next point is it is a process of assigning symbols. It means measurement is a process of assigning symbols to observations in some meaningful and consistent manner. In measurement, generally, we compare with certain standards, units, or criteria which has as an universal acceptability. Next point is it cannot be measured directly. In case of educational measurement, we cannot measure any attribute directly. It is observed through behavior. For example, the reading ability of individual can only be measured when he is asked to read a written material. तापर नेक्स्ट हो it is a means to an end but not an end itself. The objective of educational measurement is not just to measure a particular attribute, rather it is done to evaluate to what extent different objectives have been achieved. Then this is all about your nature of educational assessment. तापरे नेक्स्ट पढ़ा एजुकेशनल मेजरमेंट, तापरे आम देखा मीनिंग ऑफ असेसमेंट. व्हाट इज असेसमेंट? इन एजुकेशनल सेटिंग असेसमेंट रिफर्स टू द प्रोग्रेस students have made towards a given educational goal at a point of time. It is not concerned with the explanation of underlying reasons and does not offer recommendations for action. It offer over. The term assessment covers activities included in grading, examining, certifying, and so on. Assessment is the process by which information are obtained related to some known objectives. Assessment is a broader term which includes testing. Assessment होची कौन testing ठारो टिके अधिका. Tests are assessment made under untrapped circumstances, especially so that they may be administered. Therefore, it can be said that all testing are assessment, but all assessment may not be testing. Generally, all unit tests we test at the end of a lesson or unit. We assess the students' progress at the end of the course through testing. We also assess verbal and quantitative skills through different instruments, whether implicit or explicit. Assessment is most usefully connected to some goal or objective for which the assessment is designed. Assessment जहाँ पे डिजाइन करते हो सही गोल बा ऑब्जेक्टिव पे व्यवहार करा जाए. In classroom, assessment refers to all the processes and products which are used to describe the nature and the extent of a pupil's learning. This also takes cognition of the degree or correspondence of such learning with the objective of instruction. Generally,
Evaluation is used when the subject is not persons or a group of persons but the effectiveness or otherwise of a course or program of teaching or method of teaching. Assessment is used for measuring or determining personal attributes, that is totality of the student, the environment of learning and the student's accomplishment. ତାହେଲେ ଦେଖିବା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଡେଫିନେସନ୍ ଏନ୍ ଇ ଗ୍ରୋଲଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଆର୍ ଏଲ୍ ଲିନ୍ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆସେସମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଏ ଟର୍ମ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ସ ଏ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋସିଜିଓର୍ସ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଗେନ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଣ୍ଡ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ୍ ସମ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଜଜମେଣ୍ଟସ୍ ଏବାଉଟ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍। ତାପରେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ଓରେଗନ୍ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆସେସମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ୟାଦରିଂ ଆଣ୍ଡ ଡିସ୍କସିଂ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଇଭର୍ସ ସୋର୍ସ in order to develop a deep understanding of what students know, understand and can do with their knowledge as a result of their educational experience. So what are the characteristics of assessment? First point of view, assessment is linked with the course daily outcomes and standards. Next is there is a opportunity for self-assessment, goal setting and personal and professional development through reflections. Third is a variety of tools are used in the process of assessment. This takes into consideration the characteristics of the structure of the content. Next, it includes opportunities for reproduction of factual knowledge and application of skills. Next, it includes performance-based tasks related with real life. Next, assessment helps in providing specific feedback to the students about their strengths and areas of improvement. Next, principles of assessment. What are the principles of assessment? First point is assessment for learning focuses on how students learn. Second point is assessment for learning must be an important part of planning for teaching and learning. Third point is assessment should be an important aspect of a classroom practice. And the fourth point is assessment skill is one of the pivotal professional skill of a teacher. The next point is assessment should be sensitive and constructive. Next, assessment should take into account the learner's motivation. Next point is self-assessment capacity of a learner should be developed. Then this is all about your what is measurement, test and assessment. In next video we will discuss about I shall discuss about the what is evaluation and what are types of evaluation and definition and functions of evaluation. Thank you all.